Okay, I guess we should start with Aryan. ठीक है सर. Okay, so let's start from the very basics. थोड़ा सा हम स्पीड अप रखेंगे चीज़ों को so we can cover it, okay, in the due time. So starting from the very basic, IGCSE, it's 0625. Okay, first is topic is physical quantities and measurements. Okay, so when we talk about the physical quantities, there are how you can define this thing. It's any measurable quantity. Yes, Zubair, can you hear me, beta? Yes, sir. Assalamu alaikum. Walaikum salam, beta. We just have started, okay? Okay, okay. Okay, so any measurable quantity is called the physical quantity. The physical quantities में then there are two different categories जो हम mostly describe कर रहे होते हैं. One category जिसमें आप कहते हो there are base quantities and there is another that is called derived quantities. Okay, and there is another classification that is called scalar and there is derived quantity. Okay, so base quantity, if you want to define this thing, is basically you can say these are the fundamental quantities. Okay, so they provide the fundamental foundations for the physical quantities, and you can say that they are directly measurable. Okay, you don't need any other quantity to measure it, and you have the apparatuses to directly measure that thing without the help of any other physical quantities. Example, there are total seven base quantities. Okay, examples इसकी आपके पास the most commonly used five are distance or length, you can say, right, time, mass. Okay, these things are the most frequently used. इसके अलावा आपके पास टेम्परेचर भी है और आपके पास अमाउंट ऑफ करंट भी है, इलेक्ट्रिक करंट. ओके, ड्राइव्ड क्वांटिटीज को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? दे कैन बी डिफाइन एज दे आर derived from base quantities. Okay, what are the examples of that thing? आप इसमें स्पीड की एग्जांपल ले सकते हो. It can be speed, it can be acceleration, any quantity other than the base quantity is the drive quantity. Okay, is it clear, beta, till now? जी सर. Yes, Okay, sir. then okay, perfect. Then let's talk about the scalar and vector. In scalar, we know that they only have magnitude, and when we talk about the vector, we know that sorry, there is a mistake. There should be a vector. मैंने यहाँ पे it should be vector. Okay, so vector is have magnitude and direction. Okay, for scalar, the examples are mass, the time, distance, speed, etc. When we talk about the vectors, vectors में examples आपके पास आ जाती हैं velocity, then there is acceleration, then there is force. These things have the direction with them. Okay, so इनको आप क्या कहते हो? इनको आप वेक्टर कहते हो. Okay, so this is the introduction for the physical quantities. ये आप categories इसमें study करते हो. Good to go till now. जी सर. Okay, perfect. Now let's discuss about this thing measurements. Okay, तो जब आप discuss करते हो about measurements, there are different physical quantities that you can measure by the different techniques. Okay, like if you have to measure length, to measure length, what you can use scale,
right? You can use measuring tape. You can use spindle wheel. Okay. You should know when you have to use which one. Let's suppose if I ask you, you have to measure the length of the paper. आप क्या use करोगे? Scale. Scale. If I ask you to measure the length of the room, Measuring tape. Measuring tape. and yes, if you have to measure the length of the road, then it will So be table. Yeah. Button. spindle wheel. Perfect. So what are the possible errors in the measurement? It can be, वो आई लेवल का जो एरर होगा, sorry, which error? पैरेलेक्स एरर, जो लाइक आई अगर आपके Yes, पैरेलल नहीं है लाइक उस पे। yes. Parallax error. Okay. इसके अलावा Uh, इसके it can be a zero error, right? जी सर, mm, अगर आपका जो स्केल है इट्स नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो या वहां से कहीं ब्रेक हुआ हुआ है समथिंग लाइक दिस सो इट देयर कैन बी अ जीरो एरर राइट बिल्कुल सर। तो दीज आर द पॉसिबल एरर्स जो कि यहाँ पे हो सकते हैं नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट्स में आप जो करते हो दैट विल बी द मास मास को कैसे मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ balance. Yeah. बैलेंस Yeah. इट कैन बी इलेक्ट्रिक बैलेंस और दिस नॉर्मल बैलेंस होता है तो बैलेंस से जी आपके सर। पास मास भी होता है और क्या होता है वेट भी हो सकता है राइट जी सर। इट कैन टेल यू द वेट इसमें कौन से error हो सकते हैं इसमें सर पैलेक्स error हो सकता है इसमें टेक्निकल एरर हो सकते हैं ना, जैसे बैलेंस में इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, तो अब उसमें कोई हाँ इशू है लाइक। यस अगर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है तो देयर कैन बी अ जीरो एरर जी सर। राइट आपने ऊपर अभी ऑब्जेक्ट रखा ही नहीं और उससे पहले ही कोई रीडिंग आ रही है बिल्कुल। ठीक है तो दैट दैट यू हैव टू फिक्स जीरो एरर करेक्शन करनी पड़ेगी आपको जी सर। पैलेक्स एरर तब हो सकता है जब आप एनालॉग यूज कर रहे हो राइट नॉर्मल आप बैलेंस यूज कर रहे हो या बिल्कुल। स्केल यूज कर रहे हो रिमेंबर इफ नॉर्मल सब क्या होता है देयर वुड बी हुक लाइक दिस और इसके साथ ही यहाँ पे क्या बना होता है देयर वुड बी होल स्केल और यहाँ पे आपको रीडिंग्स मिल रही होती है राइट और यहाँ पे बिल्कुल। आपने कोई लोड अटैच किया होता है तो देयर कैन बी अ पैरेलल सेल राइट जी सर। इस केस में हो सकता है तो यू शुड नो अबाउट दिस थिंग अच्छा नेक्स्ट मेजरमेंट इज और क्या मेजर करते हैं हम वॉल्यूम वॉल्यूम आपके पास one way is to measure the volume of a regular shape object like the cylinder the cube or the triangle उसके लिए तो अब लेंथ के थ्रू यू हैव द formulas in mathematics right that you can apply and you can find the volume यस हम सर। यहाँ पे जो चीज डिस्कस करेंगे दैट इज बेसिकली फॉर द irregular shape object जी सर। irregular shape solid and liquid ठीक है दो चीजें हम फोकस करेंगे तो इसके लिए ओके आपके पास क्या यूज होता है मेयरिंग सिलेंडर सर, एक वो मेथड भी था ना, डिस्प्लेसमेंट मेथड, लाइक रेगुलर शेप यस सॉलिड के लिए। यस परफेक्ट बिल्कुल है वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओके सो वी विल यूज द measuring cylinder for this thing. Okay. जी सर। अच्छा measuring cylinder में let's suppose if this is the measuring cylinder for example and आपके पास यहाँ पे कुछ amount of liquid है it will be like this. Okay. So यहाँ पे आपके पास readings आ रही होंगी इसकी. Okay. So जो भी reading अच्छा one thing why this thing is curved like this. तो भी notice किया इस चीज को it will not be straight it will be curved from the corners. Why is it so? जी बेटा जुबैर यान Yes, sir. why this thing look curved in the marine cylinder सर जी क्योंकि ऐसे ही होता है पानी इस तरह इस तरह ही। ऐसी सेंटर में बेसिकली साइड्स पे क्या हो रही है बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ओके ऑन द ओके। कॉर्नर्स लाइट रिफ्लेक्ट कर रही होती है इसलिए वो थोड़े से बैंडेड आई नजर आते हैं एक्चुअल में पानी फ्लैट रहता है राइट लेकिन जी सर। कॉर्नर्स में आप देखोगे तो आपको फ्लैट नजर नहीं आएगा इट्स बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन लेकिन इस चीज को बेसिकली क्या कहा जाता है दिस होल पार्ट इज कॉल्ड मैंने मेनिस्कस
So where you have to take the reading? This reading अंडर will be द taken or this? सर Yes, नीचे वाला yes. Bottom of meniscus, right? जी So सर one possible error is this that you have to take the reading from the bottom of the meniscus. आप कहीं और से reading लोगे तो that will be wrong. Okay. Second possible error is you have to take care of parallax error. आपने reading यहाँ से लेनी है. That is the correct way. अगर आप यहाँ से eye level को रख के reading ले रहे हो, that will be wrong. यहाँ से eye level को रख के reading ले रहे हो, that will be wrong. Okay. So parallax error. Okay. And any other precaution that comes to your mind when measuring the volume of a liquid? Any other precaution? Okay, these things are usually asked in the ATP. If you have to score A star, तो आपको हर एक point पे काम करना है, okay? So you should know as many options you can. This should be on a flat surface. अगर ये flat surface पे नहीं होगा, तो जी क्या सर होगा? Correct volume नहीं मिलेगा, okay? जी सर So this measuring cylinder should be placed on a flat surface. जी सर So these are the three possible errors. ये तो simple liquid का volume आपने find करने के लिए इस चीज को देख लिया है. For the irregular solid, you use displacement method. What is displacement method? Basically, let's suppose if there is a main cylinder and there is a liquid till, let's suppose this is the liquid till that point, okay? आप क्या करोगे? You will, this is the whole liquid in it. आपने इस liquid में you have to place that irregular shaped solid in it, right? ये solid आप इसके अंदर irregular shape solid you will place inside it. So what will happen? The level of the liquid will change. It will be increased. So ये जो यहाँ पे reading थी आपके पास, this will be the, let's suppose, initial volume, and now this will be the final volume. जी So सर change in volume is Vf minus Vi. That जी will सर be equals to volume of, ऑफ इरेगुलर शेप yes, of solid, irregular shape solid. This thing is called the displacement method. Okay. जी सर So let's suppose if this solid is of low density as compared to the water, it will not sink, right? जी सर So if it will not sink, then how you can find the volume? तो सर हम कोई लाइक डेंस चीज को इसके साथ अटैच करेंगे ताकि लाइक ये फ्लोट ना करे लाइक पीस ऑफ Yes. आयरन Okay. Okay. Then देन फाइनल और इनिशियल वॉल्यूम मेजर करेंगे it can be stone or you can say piece of iron, right? यस सर अच्छा और फिर आप क्या करोगे इसको? देन लाइक मेजरिंग सिलेंडर में प्लेस करके फाइनल इनिशियल वॉल्यूम मेजर करेंगे Okay. जो चेंज आएगा तो लाइक वो वुड का होगा ठीक है. This is the VI और आपने क्या किया? आपने you will take this object from here और आप इस ऑब्जेक्ट को जाके प्लेस कर दोगे किस में? यहाँ से आप इसे प्लेस कर दोगे वाटर में. So what will happen? इसका लेवल आपस इंक्रीज कर जाएगा. जी Then that will give you VF. So delta V is equals to VF minus VI. That will be equals to volume of iron जी plus सर wood, right? जी सर And what we need? We need volume of the wood only. So आपने सर इस फिर आप वैल्यू सिर्फ में आयरन को डालें और उसका चेक करेंगे फिर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे वो भी कर सकते हो. आप पहले आयरन को डाल के उसका वॉल्यूम निकाल लो या पहले इकट्ठा निकाल के बाद में आयरन को डाल के उसका वॉल्यूम निकाल दो. इट्स सेम थिंग. ओके. जी सर Okay, it's your choice. So, but the main point is at the end, volume of wood will be equals to
this delta V minus volume of iron. Okay. Now it depends कि how the question will come. अगर regular shape iron है, maybe उसका volume आपको पहले से given हो in the question. Sometimes they can ask you the procedure, तो आप उसमें procedure लिख सकते हो. Both are the correct ways. आप पहले iron का volume निकालो, फिर attach कर दो, या पहले आप attach करके volume निकालो, बाद में iron का volume find कर लो. It's your choice. जी सर। Good to go. जी Okay, so Yes. we are done with length, mass, सर आपसे volume. बस एक रिक्वेस्ट है, हर क्लास के बाद काइंडली जो नोट्स आप लाइक सेव करके ग्रुप में शेयर कर सकते हैं हर क्लास की। I will share this file with you. ठीक है? जी जी I will share जी this PDF file with you. जी सर। अच्छा, next thing, the last thing, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं. जी बेटा, what is remaining? Time? टाइम यस। Yes, we haven't discussed this thing, right? So let's write it down here आपके पास. When we discuss about the time, how we measure it? स्टॉप वॉच। Stopwatch. What? Okay, perfect. Right. So what are the possible error in it? स्टॉप वॉच में पहले सर लिखो ना इसमें भी खुद से. 0 एरर हो सकता है। जीरो एरर हो सकता है इसमें भी। जीरो एरर हो सकता है, बिल्कुल ठीक है. फिर ह्यूमन एरर उसमें हो सकता है, क्लिकिंग द बटन में 1-2 That सेकंड is लग जाते called हैं। बिल्कुल सर। हाँ, that is called human reaction time. ये हो सकता नहीं, ये होगा हर सूरत में, right? जी सर। So this is the unique thing in the timing experiment. ये बाकी किसी measurement में नहीं था. It's different from the others, right? कि whenever you यस are measuring the time, there will be a human reaction time involved. So with the passage of time, जैसे जैसे आपकी एज ज्यादा होती जाती है, आपका ह्यूमन रिएक्शन टाइम क्या होता जाता है, ज्यादा होता जाता है. So you will have more chances of error. So how you can reduce this thing? सर आप इसको बार-बार करेंगे, Yes, बार we बार will. लाइक एवरेज रिपीट। निकालेंगे। Yes, we will take multiple readings. एंड देन लाइक टेक एवरेज टोटल Very नंबर good. से। And yes, and take average. तो इससे क्या होगा? Eliminate हो जाएगा बिल्कुल कि error? नहीं, लेकिन मेरे कम हो के ऊपर लाइक जाएगा। चांसेस कम होंगे, लाइक मोर एक्यूरेट आंसर होगा। Yes, it will be reduced. Okay, आप 100% खत्म नहीं कर सकते हो. Error will be यस reduced, but it will be still there. Okay. बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें now let's suppose the famous experiment of the pendulum. यस So let's suppose this is the pendulum. You have to measure the time period. What is time period? How many oscillations does the pendulum do in That is for the specific time? frequency कितने that you are telling. वो frequency है, मैं time period पूछ रहा हूँ. दिन? 8 oscillations कितनी देर में करता है? Yes, time required to complete one oscillation, right? यस सर। So first you have to be careful about कि one oscillation complete कब होती है. Let's suppose ये यहाँ से जाएगा एक, this is the point. Let's call it position 1. Let's call this position 2. Let's call this thing as a position 3. So this pendulum will keep on moving between the position 1 and 3, right? ये कभी यहाँ जी से सर। यहाँ पहुंचेगा 2 पे, then 2 से 3 पे. One oscillation complete हो गई है? जी सर। नो सर, अगर लाइक No. उसी पॉइंट पर वापस आएगा फिर होगी। Yes. अभी यहाँ से वापस आएगा 1 पे. Now one oscillation is completed, right? यस सर। Okay, let's take another example. Let's suppose it is starting from the 2. ये गया है 3 पे और यहाँ से वापस आ गया यहाँ पे. As per your statement, रेयान, ये उसी पोजीशन पे वापस आ गया है. क्या oscillation complete हो गई है? नहीं सर, इस नहीं पॉइंट पर हुई. नहीं, लाइक अगर वन पे जाए फिर होगी ना लाइक एक पूरी। Yes. So it's very important कि आप point of reference क्या ले रहे हो. ठीक जी है? सर। If you are जी looking from the center, then you have to look differently. और अगर आप किसी extreme point से ले रहे हो तो आप you have to look differently. Then it will move there and it will come back. Now one oscillation is complete, right? यस सर। So
This is also very important कि what is the point of reference. So this can also cause the error. ठीक है कि आप oscillations को गलत count कर लो. Okay. बिल्कुल सर, बिल्कुल। Okay. So what is the best way to calculate the one oscillation time? क्या करूं? एक oscillation का time हो, start करूं, stopwatch को stop करूं, and I can tell the time period. Is it so? सर आप ज्यादा ऑसिलेशन अगर कैलकुलेट कर लें तो उसका एरर कम हो जाएगा। यस Yes, I will choose more number of oscillations. Then I will take multiple readings. जी सर, और देन लाइक टोटल टाइम को लाइक टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन से डिवाइड करके। Yes, पहले T1, T2, 3, let's suppose यस three सर, readings लिए आपने. Then you यस will find the average of it. यस Then what you will do? Let's suppose 10 oscillations आप ले रहे थे. यस सर, Then the time period will be T average divided by 10, right? यस सर, This will give us the best result, best possible result. अगर आप number of oscillations को और increase कर दोगे तो accuracy और increase करती जाएगी, right? बिल्कुल Error सर। reduce होता जाएगा, but it will not be eliminated completely. Okay? Is it clear? Any सर questions जी from your स्पीड side? रखी नहीं। Sorry? जी जुबैर बेटा, जुबैर क्वेश्चन था बेटा आपका. Okay. Ryan, can you hear me बेटा? आपको आवाज आ जी रही सर, है? आपकी आवाज़। Okay, okay. Let's move forward. आपके पास we would so we are done with the measurement. So these are the measurements that we should know कि आपके पास सर जुबैर कैसे पूछ रहे मेजर एजेंट करते हैं. लेफ्ट। यस मैंने वो स्पीड का पूछ रहे हैं. स्पीड आपके पास इट्स नॉट द बेस क्वांटिटी दैट वी कैन डायरेक्टली मेजर. ओके हमने वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिस्टेंस कि डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टाइम. तो स्पीड इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी. So we can measure from these given things. Okay. तो स्पीड को अब सर, सेपरेटली हम नहीं करेंगे डिस्कस यहाँ पे. ओके. ओके ओके जो क्वांटिटीज हमने अभी डिस्कस की दे आर द डायरेक्टली मेजरेबल क्वांटिटीज. इस तरह से तो बहुत सी चीजें हैं. इट कैन बी द स्पीड, द एक्सेलरेशन, द फोर्स, द प्रेशर. तो हम उन चीजों के डिटेल में नहीं जाएंगे फॉर द टाइम बिंग. राइट. जी सर। ओके. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द बेस यूनिट्स because they are very important. There are total 7 and you should know the name. और क्या होगा? Their symbol, जी सर, ये ऐसा यूनिट। their SI units. Name, symbol, सही यूनिट्स। and unit. We're talking about SI unit and the unit symbol as well. Okay, so the first one is length. The symbol usually you can write L, you can write D, okay, जी सर, you can write H for the height or something. ठीक है तो different ये symbols use हो रहे होते हैं. SI unit is meter. और मीटर का फिक्स. अच्छा यूनिट्स के सिंपल सिंबल फिक्स हैं. फॉर द फिजिकल क्वांटिटी कैम्ब्रिज इज वेरी लीनियंट. ओके. सो उसके मार्क्स नहीं करते. बट इफ यू प्ले विद द symbol of the units then you will lose the mark. So you have to be careful with that. Okay. Then आपके पास mass symbol is small m or the capital M. Mostly for the total mass we use the capital M. Okay. Unit is kilogram. यस Small k, सर, small g. Okay. Then there is a time. It is सेकंड्स। small t or capital T. So the time period is seconds. Very good. And it is एस S. स्मॉल एस। Okay. And then there is a temperature. It is capital T.
The unit is Kelvin and K. Then there is a electric current. Symbol is I. Unit is ampere. Symbol is capital A. Okay. जी सर So if you see, there are some letters with a small alphabet, like the second. This Kelvin is capital. This A is capital, right? जी Capital, सर capital. They are small. This is small. This is small. Why few of them are capital? Any idea? Unit नो name सर or the name of the scientist will be with a capital letter, okay? Like the Ampere. Ampere was a scientist, so it will be capital A. Calvin was a ओके scientist, okay? ओके सर जो भी आपके पास symbol क्या है किसी scientist के नाम पे like the Newton, it will be a capital N. Okay, so you have to keep in mind. ये आपकी fingertips पे होनी चाहिए. They will be used very frequently, even in the A levels. So base units कौन कौन सी you should know them. Okay, जी सर okay. Let's talk about derived units. The units are very important और अभी we will try to drive the units क्योंकि units में आप हमेशा marks lose करते हो even if you know all the subjects all the topics और आपको units सही से नहीं आती so you are going to lose mark in each and every question क्योंकि हर जगह पे आंसर के साथ आपने units लिखनी है right so this is very important कि आपको units बहुत crystal clear हो let's talk about the speed first or you can say velocity units क्या होंगे मीटर पर सेकंड meter per second how we know लाइक स्पीड का लाइक it's डिस्टेंस ओवर distance over टाइम time okay जी very good. For the distance, it is meter. For the time, it is seconds. ठीक सेकंड है? So अगर आपको formula आता है, you can drive any unit. Then जी सर there is a acceleration. जी सर It is मीटर पर सेकंड स्क्वायर lost. Very good. It's velocity over time. So it will be velocity is meter per second divided by second. So it will be मीटर पर सेकंड meter per स्क्वायर second square. स्क्वायर Then there is a force. F is equals to ma. We know that. जी And सर for m, it is kg. For a, it is meter per second. स्क्वायर So let's तो write it फोर्स down. इक्वल टू न्यूटन्स Okay. So it is also equals to Newton. Okay. जी सर And then there is, let's suppose, the density. क्या units होंगे? केजी पर मीटर से Yes. Cube. जी So सर it's केजी पर मीटर क्यूब mass per volume. So it is kg. It is meter cube. So it is kg per meter पर cube, right? जी सर Then there is, let's suppose, pressure. It can be, it is फोर्स force ओवर over एरिया area. तो Okay. Force यूनिट्स is, पास्कल केजी मीटर पर सेकंड right. स्क्वायर So it will be kg per मीटर meter per second. जी सर Wait, let me write it. Sorry for it. It is meter second square. Okay, divided with this thing. That is केजी equals to पर Pascal. मीटर स्क्वायर Kg केजी per meter per second square. No, ओके सर okay, and that is ओके equals to Pascal. पास्कल Okay, for the energy, you can use any of the formula mgh half mv square, and even we जी know energy is equals to work, जी right? सर They both are equal. So work is force into d. Force we know that it is kg. We just have derived above. Okay, meter per second square, and there is a meter, so it will be kg meter square per second square. Okay, जी सर you can even use half mv square. You will get the same answer. You can use mgh for the energy. You will get the same answer. Okay. Then there is a power, and this thing is called joule, right? So 1 joule is basically equals to this thing.
right? Are you getting this idea? They can ask you जी in सर. the exam that 1 joule is equal to what? It's kg meter square per second square. Okay sir. So the power is basically energy or work divided by time. And from energy, we know that it is kg meter square per second square, and time is s. So it will be kg meter square per second cube, right? And जी that सर. thing is equals to watt, capital W. Okay. Watts. Then there is specific Heat heat capacity. capacity. It's denoted by C. And if you remember the formula, C is equals to E divided by Over in M delta T. delta T. For E, we know that it is Energy. kg meter square per second square. जी सर. And for mass, it is kg. kg. And for time, it is Kelvin. जी Okay. सर. So basically, this kg will cancel out with this thing, and it will give you meter square s square k, right? Okay sir. कुछ गलत है इसमें? सर टी के लिए केल्विन क्यों लाइक डेल्टा टी. Sorry, delta T is the change in temperature, no? ओके ओके. This was change in temperature. सो ठीक है. Okay. Or you can also write C in term of it's E over m delta T. If you're not going to drive this thing into the base unit, so for E you can write down joules. Okay. And for this it will be kg, and this is Kelvin. Okay. So this will be joule per kg per Kelvin, right? जी सर. ओके सर. Okay. Then there is mm, waves. In waves, there can be a unit of what is unit of wavelength? Lambda it is लैम्डा. meter. Lambda is the symbol for it. Okay. जी सर. What is the unit of amplitude? एम्पलीट्यूड. It is also in meters. Okay. यस सर. Maximum displacement from the mean point, if you remember. Okay. I'm just trying to cover all the units. Those are going to be involved in IGCSE. Okay. So you can जी. memorize it at the end. The जी सर. amplitude is m. Then एम. there is frequency. It हर्ट्स. is hertz, that is equals to per second. Okay, जी सर. 1 over s. Okay, and then there is refractive index. इसका सर कोई यूनिट नहीं होगा. Yes, it is represented by a symbol n. It is unitless. Why? लाइक क्योंकि लाइक सर ये कंपैरिजन है ना दो लाइक क्वांटिटीज के बीच में. Yes, it's the ratio of Yes, same sir. physical quantities, right? जी सर. So it's unitless. Then there is, if we talk about current, current is basically the base unit. So we are just discussing the derived units. Then there is a charge, Q. We know that Q is equals to I into T. Remember, current is Q over T, so Q is equals to into T. जी सर. याद है नहीं याद बेटा? याद है सर. ठीक है. So for current it is ampere, for time it एम्पेयर is second, सेकंड्स. and Q is basically coulomb. So coulomb is ampere second. जी सर. Okay.
Then there is voltage or the potential difference. Okay, we have different formulas for it. The basic one is V is equals to W over Q. W is the energy over the work done. अभी आपने ऊपर भी ड्राइव किया है इसका. The work done it's basically F into D, right? So इसका unit you can write it as for F you can write Newton, for D you can write meter, and for न्यूटन you can write C. So it can be Newton meter per coulomb. Okay, और and वोल्टेज. this is equals to watts. जी सर. Okay, you can even drive this thing into the base unit as well. How? You can put Newton is equals to kg meter per second square, and coulomb is equals to ampere second. Okay, then you will get the base units. Okay, ठीक है सर. okay, then you're done with the voltage. It's the same for EMF. Voltage and EMF both have the same units. Power we already talked about. Electrical power or the simple power, they all have the same units. Okay. Then there is Hubble constant. Okay. What is the unit for it? हबल्स कांस्टेंट. एक It was V over D. Okay. Velocity over distance. It will come yes, to your mind when we'll discuss the topic. So it is meter per second, and this is meter. So it will be 1 over S. Okay. Per जी second, it's units. यस सर. Okay. So that's it. These are all the units, those are going to be involved in your whole IGCSE syllabus. And I guess these are all the formulas as well. ठीक है सर. Okay, that we have done. So ठीक है, I'm going to share this file with you. You can review this thing in detail and you can ask me if you have any question. Okay, फिर हम discuss करते हैं सर इसको. वो मैंने पूछना था कि लाइक अगर मेन सोर्स के लिए हम लाइक वो सेव माई एग्जाम्स के जैसे लाइक मेरे पास नोट्स है ना, तो लाइक वहां से पढ़ लें और रिवीजन के लिए जैसे ये नोट्स हैं आपके इस तरह. Yes, yes, yes. It's good to go for the ठीक. detail because there is a theory. ठीक है, जी आप सर. उसको वहां से डिटेल में रीड कर लो. Examples हैं that you can solve, or even you जी can consult the book. I will share the book as well if you need in the PDF. ठीक है, so you can वेट do नहीं the कर रहा examples, the आप questions शेयर कर from there. दीजिए. और ये मैंने I have shared this file. ओके, और हम इस मेजरमेंट्स के टॉपिकल्स कर लेते हैं आज हाँ, बिल्कुल परफेक्ट. एज बट ये जो होमवर्क। फाइल मैंने भेजी है इसको अभी रिव्यू करो एंड देन आस्क मी द क्वेश्चन इफ यू हैव एनी. ओके, यू हैव 10 जी ठीक है मिनट्स सर। एट मैक्स. ठीक है, ताकि हम लास्ट में से डिस्कस भी कर लें. ट्राई करो जो चीजें खुद से सॉल्व करने, सॉल्व करो सारा ए टू जी, इस चीज को देखो. आई एम वेटिंग. ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर.